Okay, if you remember last class में हम लोगों ने nature of aqueous solution की बात कर ली थी, whether a solution will be acidic, basic or neutral. We can identify it by comparing H plus, OH minus and root Kw. And in other terms, we can compare pH, pOH and half pKw. These were the three things we can compare always. And I told you earlier also that at 25 degrees C, Kw was 10 raised to minus 14, and that's why root kW will be 10 raised to minus 7 and pKw, half pKw will be 7. Hai na? So that's why we need to be careful if they are talking about any temperature which is not a 25 degrees C. We need to know that the neutral point pH has shifted. It may shift either rightward or leftward. और ये चीज मैंने इस diagram से बताया भी था, and I'll give you the conclusion of this one also. And we had this question है ना last में. Tell me the answer of the first question. If you see the first question, it is asking pH equals 7 under this given condition of temperature T where Kw ka value is this much. What will be the nature of solution which is having pH equals 7? Will it be neutral? Anyone? Will it be neutral? Okay, acidic. ठीक है. Let's see. If I'm having first one, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना? At the given temperature, we'll talk about all those points of comparison, है ना? So at given T, it is giving you Kw, which is 6.4 into 10 raised to minus 15. We can also write it as 64 into 10 raised to minus 16, so that we can have easily square root ले सकते हैं इसका. So we'll write root Kw is 8 into 10 raised to minus 8. That's one thing. Or if they are asking you half pKw, so half pKw will become 8 minus log 8. 8 minus log 8. If I'm taking log 2 as 0.3, then we'll write it. It will be 8 minus 3 times 0.3, and that's why it is becoming 8 minus 0.9, that is 7.1. Na? So this is the neutral point pH, and then we can compare whether the given pH is less than, equal to, or greater than that. And that's why for the first question, if they are saying pH equals 7, we are writing that it is less than half pKw, because half pKw is 7.1. And that's why it will be an acidic solution, because pH is less than half pKw. Hai na? So we'll say this is acidic solution. Any doubt? Anyone having any doubt? Second question. They have given you H plus. Okay. So they have given you H plus is 9.5 into 10 raised to minus 8. Now if I have been given H plus, now I have already got the... So you missed the question. Which the second one is POH equals 7. Sorry. So second one is POH equals 7. So obviously if POH is less than half pKw, then it becomes basic, hai na? Because then we'll say that pH will be greater than this, hai na? And that's why we are saying that this value is representing a basic solution. Is it okay? Third one. Let's see the third one. If I'm having H plus, can be doubt rahega, just ask me. 9.5 into 10 raised to minus 8, which is greater than root Kw. And then again we are saying if H plus is greater than root Kw, it is acidic solution. Hai na? Third ka we'll call it acidic solution. So see, in various questions I am just giving you the idea of what to compare. Hai na? Otherwise, always you can calculate pH and you can compare that with half pKw, or we can compare it with we can compare it with POH. But we'll be talking about anything which is more comfortable, more convenient than comparing always pH and half pKw. So that's why I'm giving you different questions में how to do the appropriate comparison. H plus दिया अपने पास root Kw, will compare it with that. अगर उन्होंने PS दिया, we have got half pKw, we'll compare it with that. POS दिया, we can compare it with half pKw, we can have the conclusion, है ना? So that's why I'm giving you this question, so that we can have the clarity in what case what to compare. If I'm getting OH minus,
which is 8 into 10 raised to minus 8, it is exactly same as root kW, है ना? And that's why we'll say in this case, this is neutral solution. Fifth one, pure water. What will be the answer of it? What to write here? It is always neutral, है ना? Very good. So this is always neutral solution because it will give you H plus and OH minus exactly same, and that's why if H plus is equal to OH minus, it is always a neutral solution. So pure water is always neutral. We cannot say that its H plus will be 10 raised to minus 7 because we are talking about temperature which is not 25 degrees. Yeah. So this is one point. Like I told you, the graph का shifting जो मैंने बताया ना temperature के साथ, how to compare it, how do the neutral point pH is changing. सो आई राइट दैट पार्ट ऑल्सो. ऑलरेडी समझा दिया था मैंने कि टेम्परेचर बढ़ने से केडब्ल्यू बढ़ता है तो पीकेडब्ल्यू कम होगा, हाफ पीकेडब्ल्यू कम होगा. दैट्स व्हाई टेम्परेचर बढ़ने से न्यूट्रल पॉइंट पीएच इज शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड in comparison to that 7 wala point, and if I am decreasing the temperature, the neutral point pH will be shifting rightward of that pH equals 7 wala point, है ना? So the appropriate shifting को consider करके then we can identify the given pHs lying in acidic region or in basic region. Okay, so this is another point. There are two phenomena which we will be talking about again. पुरानी चीज है, ऑलरेडी बताई हुई चीज है, बट नए नाम के साथ आ रहा है. What is that? This is called common ion effect. What is common ion effect? So I'll give you an example, then we'll talk about this. Like if I'm having a weak acid, if I give you the example of CH3COOH, and I'm talking about its ionization in water or in aqueous solution. So we have got this equilibrium established between the unionized form of that acid and the ionized form of the acid, and it will have some Ka. Now, if I talk about, अभी भूल जो आयनिक पढ़ा है, केमिकल ट्री में पढ़ा था, if I'm adding water to this solution, I'm increasing the volume, है ना? If I'm adding water, because we are talking about a reaction which is in aqueous solution. So aqueous solution में if I'm adding water, that will increase the volume of the solution. If I'm increasing the volume of the solution, shifting will occur in which direction, forward or backward? वॉल्यूम बढ़ाने से शिफ्टिंग किधर होती है, जिधर गिवन फेज में मोल्स बढ़ रहे होते हैं ना. दैट्स व्हाट वी हैव लर्न इन लास्ट ईयर प्रिंसिपल लीचे टेली, है ना. सो दैट्स व्हाई विल से इफ आई एम एडिंग वाटर, इफ आई एम एडिंग वाटर, वाटर ऐड करने का मतलब वी आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का बढ़ना विल रिजल्ट इन फॉरवर्ड शिफ्ट, एंड फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब है अल्फा ऑफ दिस CH3COH इज इंक्रीजिंग. इज इट ओके? So now this is called common ion effect. And ऐसा मैंने बोला कि सॉरी, एक फिनोमेनन लगता है बताया नहीं मैंने, ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ नहीं बताया ना. ओके, सॉरी सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट. मुझे लगा मैंने वो बताया. चलो ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, उल्टा हो गया थोड़ा सा. आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ एंड देन वी विल टॉक अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ पहले कर लेते हैं. So now what I was talking about Oswald dilution law, I thought कि मैंने वो बोला हुआ है. हाँ. So what I was saying that if I'm diluting a solution, that means weak electrolyte का degree of ionization will increase, है ना? Is it okay? Is it okay? But what I'm saying that the concentration of the electrolytes, concentration of ions given by electrolyte will not increase. It in fact it will decrease. Why we are saying that? Because moles तो बढ़ रहे हैं but volume के proportion में moles are not going to increase, है ना. Volume double करने से degree of ionization double नहीं हो जाएगी. And that's why we are saying that the concentration is not going to increase of the ions, but the moles are definitely going to increase. So we are saying that at least alpha of this weak electrolyte is increasing. Now I'll give you the mathematical part also. Like if I'm talking about this one, and if I try to do the calculation, if I'm having CS3COH, which is a weak electrolyte, and if I write CS3CO minus and H plus aqueous, we are getting, and some Ka was given initially. If you just see,
No, Ishan, what is happening here na, moles are increasing but volume is also increasing है ना. And now the point is moles are increasing in not that much proportion in which volume is increased है ना. मान लो मैंने वॉल्यूम को 10 टाइम्स कर दिया है, अल्फा अगर 0.5 था तो फिर अल्फा कैन नॉट बी 10 टाइम्स ऑफ दैट है ना, इट कैन नॉट बी 5 बिकॉज अल्फा तो 1 को क्रॉस ही नहीं कर सकता है. एंड आई गिव यू मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दैट आल्सो. इज इट ओके ईशान? What I'm telling you, the point is qualitatively I'm telling you that in whatever proportion volume is increasing, alpha will not increase in that much proportion. That's one point. Second point, I give you the limitation that volume तो किसी भी proportion में बढ़ा सकते हैं. Alpha के लिए तो limit है, it can never cross 1 है ना. And that's why we are saying कि definitely ये तो नहीं होगा कि concentration will be increased by the same amount in which you are increasing the alpha. Okay. Mathematical proof of that is if I'm taking this one initially without ionization, it was the case. At equilibrium, if I'm saying that this was becoming C into 1 minus alpha, the decrement was C alpha. So this will become C alpha will be the increment. So this will become C alpha. This will become C alpha. है ना? Now at equilibrium, we can write K equals Q. अभी जो ionic पे पढ़ा है वही use कर रहे हैं. At equilibrium, this K will be equal to C alpha raised to 1 into C alpha raised to 1 divided by C into 1 minus alpha raised to 1 है ना. And that's why if you see we are getting C alpha squared by 1 minus alpha. ये वापस से आएगा. I'll be using it again. ठीक है, अभी के लिए just to prove this point Oswald dilution law बताने के लिए I'm giving you this idea. So now we are saying alpha squared by 1 minus alpha is coming K upon C. Now, if I'm considering electrolyte to be weak and if it's alpha, otherwise it will become a quadratic which is difficult to analyze. But if I'm saying for alpha much less than 1, we can write 1 minus alpha will be approximately 1. And that's why we can write that equation will become alpha square is equal to under root K by C. After writing that, what we are getting, alpha is becoming under root K by C. That's first expression we are going to use. And the second expression is if I'm talking about any concentration of any ion, so देखो what will happen there. If I'm talking about what will be the concentration of H plus or CH3CO minus, if you see that part, it is C alpha. So C alpha is becoming C into under root K upon C, which is becoming under root K into C. So this is second part. Now, after using getting these two expressions ना, if I ask you water add करने से the concentration of acetic acid which you have added or in more water it will get less concentration with the same number of moles है ना. So when we are saying on dilution से क्या हो रहा है, we are saying that C is decreasing है ना. C is decreasing का मतलब है alpha which is under root K upon C will increase है ना. But we are saying the concentration of ions H plus or CH3CO minus which is becoming under root K into C will decrease na. So mathematics will also suggest you the same thing that if you keep increasing the volume of the solution, the alpha will keep increasing, but the concentration of ions given by these weak electrolytes are decreasing. Any doubt in this part? Then we'll go back to the statement which I have written earlier. But mathematically, dekh lo isko. If you have any doubt, just ask me. If you have any doubt. Anyone having any doubt in this part? चलो ठीक है, तो इसी को वापस देख लेते हैं. स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा हुआ है. पहली बात तो एक ध्यान में रखना, कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन नॉट एट द लेवल ऑफ एडवांस तो नहीं, बिल्कुल मेंस में कभी दिख जाए तो दिख जाए. नॉर्मली हम लोग इन नीट लेवल पे बात करते हैं. समटाइम्स विल बी आस्किंग यू फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट वैलिड. So I've already written here it is valid only for weak electrolyte. That means it will not be valid for strong electrolyte. Strong electrolyte is already 100% ionized and in that equilibrium is not there. So shifting की तो बात ही नहीं होगी ना. It is already completely dissociated or ionized है ना. And that's why it will never be valid for strong electrolyte. That's one point. Any doubt in that? Now if you can see the statement on dilution of, देखो मैंने bold करके लिखा है a weak electrolyte degree of ionization will increase but concentrations of ions
will decrease. Is it okay? So this was the statement जिसको मैंने Oswald dilution law बोल के रखा है. Any doubt in this? Any doubt in this? तो ये एक स्टेटमेंट था. अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मान लो मैंने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया. इफ आई एम इनफाइनाइटली डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, that means it will be having C tending to 0, ऐसा होता चला गया. तो मैंने डाइल्यूट किया, अल्फा बढ़ा, डाइल्यूट और कर दिया, अल्फा और बढ़ गया. बट इट कैन हैव अ मैक्सिमम लिमिट वेयर इट कैन बी टेंडिंग टू 1 हो जाएगा ना. And then we can say that if I'm having an infinitely diluted solution, weak electrolyte will also start behaving as strong electrolyte because its alpha will become very close to 1, है ना. Is it okay? So that's why if it is very extremely diluted, na, this is CS3COs लिया, which is a weak electrolyte. And if I am having another electrolyte which is strong electrolyte, we are going to get almost equal pH for both the electrolytes, even if in the name of these things we are saying that one is weak, another is strong. But if you see the concentration, this is extremely small concentration, 10⁻⁻8, कुछ भी नहीं. So almost infinitely diluted की तरह इसको treat कर सकते हैं. That's why we'll say कि pH दोनों में same ही मिलने वाला है. But it will not happen if I'm talking about 10⁻⁻1 m or 10⁻2 m. इन सब रेंजेस में अगर कंसंट्रेशन रहेंगे ना, then CH3COH का pH होगा ना, वो ज्यादा होगा. That means वहाँ H plus कम मिल रहा है. HCl being a stronger electrolyte or a strong electrolyte will give you more pH. Any doubt in this case? In this point, any doubt? तो ये कहानी थी तुम्हारी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. एक और टर्म है जिसकी बात मैं करना चाह रहा था, कॉमन आयन इफेक्ट, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा भी था. तो पहले आप अब वो भी कवर कर लेते हैं. देन विल टॉक अबाउट जितने केसेस मैंने बोला है कि दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी केसेस इन आयनिक इक्विलिब्रियम, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. तो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोल रहा है? अगेन पुरानी ही चीज है, नए वर्ड्स के साथ आया है. इफ आई एम हैविंग, again same example I'll give you. If I'm having CS3COH which is having equilibrium in an aqueous solution, CS3CO minus aqueous plus H plus aqueous, and it was having some equilibrium constant. Now if I say I'm adding any source which is providing H plus in the solution, like if I start adding HCl in the solution, that means I'm adding H plus and Cl minus. H plus is on the product side. Adding H plus will shift the equilibrium with direction, forward or backward. If I'm adding H plus, it will shift the reaction in which direction, backward or forward. Backward है ना, क्योंकि product add करने से backward shift होता है ना. So if I'm adding H plus, अगर मैंने add करना start कर दिया somehow by adding, like HCl add करना start कर दिया, so what will happen? This is going to shift the reaction in backward direction, so there will be backward shift. And backward shift होने से तो अल्फा कम होता है ना, alpha of the weak electrolyte is decreasing, है ना. So that's why we are saying that if I am adding source of a common ion in a solution containing a weak electrolyte, then decrease in degree, we'll observe the decrease in degree of ionization of the weak electrolyte, and as a result concentration of ion which is not common. ये तो मैंने ऐड भी नहीं किया है, तो अब बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इसका कंसंट्रेशन तो कम होने लगेगा ना. सो यहां मैं बोल सकता हूं इन अबव केस adding HCl will decrease alpha of CS3COH, resulting in lower concentration of CS3CO minus ion, which is not the common ion. The ion which is not common will have a decreased concentration.
ओके, इज इट ओके? एनी डाउट? तो बात वही है जो हम लोगों ने केमिकल में पढ़ा था, वही चीज यहाँ भी है। बट लाइक आई टोल्ड यू, दो चीजें अब यहाँ पे, विल टॉक अबाउट एग्जांपल्स आल्सो। एक तो ऑलरेडी मैंने दे दिया, बट दो चीजें हैं यहाँ। पहली बात ये है कि CH3COH का आयनेशन वाज suppressed in presence of HCl, but HCl का आयनेशन will not suppress due to CH3COH, है ना, because HCl is already a strong electrolyte, तो उसका आयनेशन सप्रेस हो ही नहीं सकता है। So what we'll say, common ion effect is always imposed on the ionization of weak electrolyte, but it can be imposed by weak or a strong electrolyte. If I just add HCOH भी ना, मान लो मैंने formic acid भी add किया, that will also suppress the ionization of acetic acid, but in return acetic acid will also suppress the ionization of formic acid. Is it okay? So weak electrolyte will always have suppression in its ionization due to presence of any other substance which is providing common ion in the solution. But strong electrolyte, even if it is having a common ion, strong electrolyte will not suffer that suppression in the ionization because it is strong electrolyte. वहां तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, इक्विलिब्रियम रहे तब तो शिफ्टिंग की बात करेंगे ना। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया, मान लो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है विच आर हैविंग कॉमन आयंस, all the weak electrolytes will suffer common ion effect, but stronger the electrolyte, less will be the suffering. Weaker the electrolyte, more will be the suffering, or more will be the suppression in its ionization. जैसे बोलते हैं ना, गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है, वैसा वाला कहानी है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, the one which is weaker electrolyte will suffer more, the one which is stronger electrolyte will suffer less, है ना। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया तब तो इट विल नॉट सफर। मतलब इट्स लाइक तुमने महंगाई बढ़ा दी, कम कर दी, तो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास विल सफर मोर, अपर मिडिल क्लास विल सफर लेस। जो अपर क्लास या बियॉन्ड अपर क्लास हो जाएगा दैट विल नॉट सफर एट ऑल, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता इतना ज्यादा। तो दैट्स द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। तो टेक्निकली वी आर सेइंग दैट if I am having a solution in which you are having multiple substances with common ion, then common ion effect can be imposed on weak electrolyte, but by strong as well as weak electrolyte. For given weak electrolyte, stronger the electrolyte, more will be common ion imposed by it, and less will be common ion effect imposed on it. Is it okay? एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, देन यू विल हैव मोर क्लियरिटी। वाटर को अज्यूम ना करके ये आंसर देना है, दैट मींस यू हैव टू इग्नोर water while answering these questions. It is obviously in the aqueous solution, but while reporting the answer, just exclude water, because water is the weakest one. It will always suffer maximum. It will always create least common ion effect on it, है ना। तो वो अगर मैं हटा दूं, then just answer all these questions. If I ask you, this is my first question, what will be the answer here? Tell me. Mark, tell me the answer of this one. Common effect can be imposed by. We have got all the options. कोई भी एक बता दो, कौन किस पे लगाने वाला है? We have got formic acid, we have got acetic acid, we have got HCl. मैं मान लो यहाँ HCl बोल दिया, तो किस पे लगा सकता है कॉमन आयन इफेक्ट? किसी पे भी, मतलब दोनों पे लगा सकता है ना, तो HCOH पे भी लगाएगा, and HCl can impose common ion effect over CH3COH also. Aditya, tell me, if I am writing here HCOH, it will impose common ion effect on what? Aditya? You have got three substances, HCOH से लगा रहे हैं, किस पे लगा सकता है? Can it impose common ion effect on HCl? Aditya? Okay, Vivana has given me the answer. Aditya, why are you not answering it? Switch on your audio. Aditya? ये इशू है यार इसका। आदित्य, कैन यू लिसन टू मी? साहब आदित्य, कुछ और ही कर रहे हो क्या?
I'm removing you, joining me again after calling me. Okay, I've got the answers. Many people have answered already. Okay, let me see. So basically it can impose common ion effect on CS3COH, but can it impose common ion effect on HCl? No, na, because HCl is a strong electrolyte. If I write here CS3COH, can it impose common ion effect on HCl? No. Can it impose common ion effect on HCOH? Yes, because it is also a weak electrolyte. But now if I am asking what on which substance which electrolyte common ion effect cannot be imposed, so I'll write HCl है ना. HCl पे नहीं लग सकता by not by CS3COH, not by HCOH, किसी से नहीं लग सकता है ना. Now, maximum common ion effect will be imposed by what and on what? Now answer me. Vivan, tell me the answer. Maximum common ion effect will be imposed by HCl. Okay. Raima, on what? So on CH3COH. And why is that? So more at Why not HCOH? Okay, Vivan has got the answer. Neil, why HCOH you are saying? Neil, you there? No, number of carbon is not giving it. Yeah. Okay, so the reason is coming from this number. वैसे तो GOC में भी we have learned कि CH3COH will be weaker acid than HCOH. लेकिन अभी यहाँ numbers भी already available है ना. So that's why we are saying this is weaker than HCOH है ना. And that's why the one which is weaker will suffer more, and that's why CS3COH is the weakest electrolyte. वैसे तो water will be the answer. ऐसे तो water होता, but I am removing that water as an option. Then we'll say maximum common ion effect is imposed by HCl, and obviously that will be on the weakest available option, and that is CS3COH. Now, common ion effect imposed on HCOH. हाँ जी? सर एक डाउट था. हाँ बोलो ना. सर HCOH और CH3COH में CH3COH weaker होगा, right? Yes. So how is it possible that CH3COH will also like impose a common ion effect? Yes, it will impose, but it will impose at less, with less extent. Okay. So लेकिन फिर भी common ion effect है, वो common ion effect impose कर सकता है, but if it is weaker, it will impose it by less extent, है ना? So लेकिन for weak electrolytes, the stronger the electrolyte, more is the common ion effect, right? So imposed by it, yes, stronger रहेगा तो it can impose greater amount. It will be having less imposition over itself, है ना? Okay, sir. Okay. Yes. And that's why we are saying ki highest will be by the strongest. Strongest is HCl. Weakest other than water is CS3COH. Common ion effect imposed on HCOH by CS3COH will be, क्या होगा यहाँ पे आंसर बताओ रेयान? What should I write here? Sir, greater than. Okay, so you are saying CS3COH is going to create greater common ion effect. CS3COH is weaker, na? Yes, sir. That will create less common ion effect. And HCOH is going to create more, na? देख लो एक बार ध्यान से. And if you have any doubt, just ask me. Sir. हाँ जी. So in that maximum common ion effect will be imposed by HCl on CH3COH. Can the number of hydrogens have anything to do with it as well? No. It is not about that. It is about the strength that will be represented by the equilibrium constant. Na? Okay. First thing. Second thing, CS3COH is having 4 hydrogen. All of them are not acidic hydrogen. Only the
COOH वाला हाइड्रोजन इज द एसिडिक वन है ना, दिस Yes, वन sir. इज द एसिडिक हाइड्रोजन, तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं. हाँ, हाँ. presence of CH3 group in place of H is making it less acidic because CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट होता है that will make it weaker acid than HCOH है ना, that we Yes. have learnt in GOC वाला part है ना. Hmm. Okay, so these were the two effects. हाँ जी बोलो. Sir, तो sir, HCOH is a stronger electrolyte than CH3COH. So, Yes, sir, what yes. greater? Sir, like, Okay. won't the common effect be greater? हाँ, So won't the common effect be greater than that one on CH3COH by? Oh, okay. Yes, I understood. ध्यान से लैंग्वेज देखो है ना. Sir, I read the question wrong. Okay, चलो. Yes. So CH3COH being a weaker electrolyte will impose less common ion effect. HCOH being a stronger electrolyte that can impose more common ion effect है ना. बाद में जाके देखोगे ये न्यूमेरिकल में आएगा. I'll be giving a case in which I'll be having HCOH and CH3COH both present in the same solution, and then we'll talk about the alpha of the two electrolytes. देखोगे CH3COH का काफी गिर जाएगा, HCOH का भी गिरेगा, but उतना नहीं गिरेगा जितना CH3COH का गिरेगा. Okay, that will be one of the cases. Now, like I told you, we are going to enter into what I call the Mahasagar of cases. We are going to deal with 20-25 other than 25 से 30 के बीच में cases. But like I told you, if I'm talking about first 10 cases, there will be 5 pair of cases, I'll say. Okay, so we are going to enter in those sections. I'll be talking about in general, and right now I'll be talking about only 25 degrees से. बाद में अगर उन्होंने चेंज किया तो वी नो दैट कि वी नीड टू चेंज द रूट KW का वैल्यू, और वहां से फिर बाकी आगे काम कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट वी आर गोइंग टू deal with the first few cases today itself. Like if I am having strong acids, strong base, ऐसा वाला combination जितना आएगा वो सब पहले कर लेंगे. Then we'll talk about कि बाद में if I am having वीक वाला केसेस का एंट्री हुआ, वीक एसिड आ गया या वीक बेस आ गया, तो फिर क्या करेंगे, दैट विल सी दैट. तो फर्स्ट केस इज we are going to talk about if I am having an aqua solution in which one or more strong acids are there, then what to do. ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, बाद में तो मैं शॉर्टकट एक बता दूंगा कि in what case we have to do what, but strong acids are completely ionized है ना. तो first point is we are going to have strong acid or acids are completely ionized. First thing, so if that acid is like HA, in this list if you see na, the only acid which is diprotic is H2SO4 है ना, बाकी सब तो HA type के acids हैं, so they are going to be completely ionized. तो कोई equilibrium ही नहीं आएगा. we'll directly write H plus aqueous plus A minus aqueous. like HCl है तो H plus aqueous, Cl minus aqueous, HClO4 है तो H plus aqueous, ClO4 minus aqueous है ना, and there is no equilibrium, so there is no equilibrium constant here also. तो मान लो कुछ ये इसका initially there was some concentration, it was like कुछ भी रहा होगा concentration इसका C 0 तो after ionization it will be completely ionized, ये 0 हो जाएगा, and then it will become C and C है ना. Is it okay? That's one thing. If I talk about even H2SO4, अच्छा H2SO4 का एक स्पेशल केस मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट टिल नाउ अभी तक जितना मैंने बोला है, एंड इफ आई डोंट गिव एनी डिटेल अबाउट द H2SO4 का कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसी कोई चीज ना दे, तब तक के लिए विल बी राइटिंग इट लाइक 2H plus aqueous. रिसेंट पेपर में एक में दे दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे आफ्टर केस नंबर 10. विल टॉक अबाउट दैट, बट राइट नाउ आई विल बी डिस्कसिंग इट लाइक दिस ओनली. तो मान लो इनिशियल आई एम जस्ट राइटिंग इट, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये C/2 कुछ था, तो ये 0 and 0 था. आफ्टर आयनाइजेशन इट विल बिकम, जस्ट टू मेक इट कॉमन कि H प्लस दोनों में सेम वैल्यू आ जाए, आफ्टर आयनाइजेशन when it will become 0 it will become C and it will become C/2 है ना. Is it okay? Any doubt in this part? Now what will happen, am I missing anything H plus के लिए, am I missing anything till now? मतलब मैं आगे pH कैलकुलेट करना चाहूंगा, शुड आई राइट माइनस लॉग ऑफ C H प्लस का वैल्यू,
Should I write that? वाटर भी तो है ना, और वाटर भी तो H प्लस का सोर्स है. हाँ, इट वाज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट हो सकता है ना, वी कैन बी गिवन अ केस वेयर H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी लेस. तो हाउ मच विल बी कॉल्ड वेरी लेस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड देन विल डिस्कस कि क्या होने वाला है. सो नाउ लेट, लाइक आई टोल्ड यू, ऊपर मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर सेट किए थे, that I can write let H plus from strong acid. I'm not talking about strong acid का concentration itself. I'm talking about H plus from a strong acid is C. Case 1. मतलब case within case बता रहा हूं मैं. If C is greater than equal to 10 raised to minus 6. Why I'm taking this number? That will be clear if I write whatever I want to write after that. Then H plus from water can be considered much less than H plus from strong acid. Why I have written like that? Anyone? How I have got this number 10 raised to minus 6? ये अलग से आप अचानक से अपने मन से मैंने ये नंबर क्यों लाया? साइंस का एक रूल मैंने बताया था लास्ट टाइम, अप्रोक्सीमेशन का या नेग्लेक्शन का. व्हाट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू व्हाट? याद करो, इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग. 1/10 of something. Okay, I'll just give you the idea. In absence of acid, what was the H plus from water? 25 डिग्री सी पे बात कर रहे हैं. अदरवाइज विल राइट इट, इसको अगर देखो, अगर टेम्परेचर चेंज करें तो 10 टाइम्स KW लिख देना. ठीक है. सो H प्लस फ्रॉम वाटर जो था ना, दैट वाज रूट KW, एंड इट वाज 10 raised to minus 7 at 25 डिग्री सी, है ना. एंड ऑलरेडी मैंने बताया कि बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड इज गोइंग टू इम्पोज कॉमन एन इफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो अभी तो इस तरह से कमी आने वाला है डेफिनेटली. 10 raised to minus 7 से तो कमी आएगा. Now, if I want to play safe that I can definitely ignore H plus from water, I need to have any number which is more than 10 times of 10 raised to minus 7, है ना? And 10 times of 10 raised to minus 7 is nothing but 10 raised to minus 6, and that's why I have taken this number. Any doubt in this case? So if I'm getting that situation, I'll directly write H plus total will be H plus from strong acid, and that will be equal to C, and that's why pH के लिए directly minus log of C can be written. Is it okay? सर आपको प्लीज फिर से समझा सकते? फिर से बता रहा हूं मैं. वाटर से H प्लस कितना आने वाला था? अगर कोई एसिड नहीं होता तो कितना आता? 10 raised to minus 7, है ना. अभी स्ट्रॉन्ग एसिड आया, कितना भी आएगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा ना. तो वाटर का H प्लस अभी 10 raised to minus 7 से तो नीचे ही रहने वाला है ना. Now, if I want to neglect that number which is below 10 raised to minus 7 to be on the safer side, definitely अगर मेरे पास कोई नंबर 10 raised to minus 6 से ऊपर है तो definitely 10 times से ज्यादा नंबर है ना. And that's why if I'm saying कि what H plus from strong acid अगर वो 10 raised to minus 6 से ज्यादा है तो water का H plus जो है उसको तो definitely ignore कर सकते हैं अभी, है ना. And that's why in that case we are definitely saying कि 10 raised to minus 6 से ऊपर अगर H plus from acid है ना, तो water का H plus तो definitely 10 raised to minus 7 से नीचे होगा. That can be neglected, and it is to be on the safer side. It is not exact, but it is to be on the safer side. कितने से ऊपर में तो definitely ignore कर सकते हैं. Ignore ना करने के condition में क्या आएगा, that we'll discuss right in the next part. Is it okay? चलो, तो ये कहानी ऐसी होगी. अब यहाँ जैसे ही आ जाएगा तो विल जस्ट चेक इफ इट इज ग्रेटर देन 10 raised to minus 6, तो सीधा माइनस लॉग ऑफ C करके वी कैन कैलकुलेट द pH. दैट्स वन पार्ट. सेकंड पार्ट इज, इसी में मान लो अगर दूसरा केस आ गया, इफ आई से केस 2 is if C is not that much, it becomes less than 10 raised to minus 6.
then what will happen? तो यहां पर बोलेंगे H plus from water cannot be neglected, है ना? In comparison to H plus from acid. And that's why अब अपने को क्या करना पड़ेगा? We need to write H2O वाला equation where we were writing H2O giving H plus aqueous plus OH minus, and मैंने बोला था पहले लास्ट टाइम ही हम लोगों ने डिस्कस किया, तो whenever I am having any aqueous solution we can always write H plus into OH minus equals KW, है ना? तो now अभी at equilibrium पे मान लो ये या बिफोर आयनेशन कुछ C रख लो, बिफोर आयनाइजेशन अगर ये ऑलरेडी C था, ये 0 था, तो आफ्टर आयनाइजेशन इट विल बिकम C प्लस, याद करो इसको मैंने बताया था या तो मैं इसको x लग सकता हूँ कि ये x है, ये x है, बट x को मैंने बताया था 1000/18 अल्फा, है ना? x was 1000/18 अल्फा, है ना? नाउ वी आर सेइंग कि अगर मैंने इग्नोर किया होता तो सीधा देखो C into x को मैं KW लिख देता, है ना, और x निकल आता, बट दिस टाइम वी कांट इग्नोर इट एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग H plus into OH minus is equal to KW. So we have got a quadratic equation. C plus x into x is equal to KW, which gives you x square plus CX minus KW equals 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो सॉल्यूशन इज x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस ही लिखेंगे बिकॉज वी कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू फॉर x, b square that means c square plus 4kw upon 4, है ना? upon sorry 2 ये not 4 2 2 ये लिखते हैं तो that will be 2 only. Now if I have to write, अब इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो अल्फा पूछ दिया वाटर का, तो I'll write x की जगह 1000/18 अल्फा, है ना? But otherwise if I have to calculate h plus total, that becomes c plus x, and that will become c plus this whole thing. And if you simplify it, you'll directly be getting this one. Just solve it, you will get this one. माइनस का साइन सिर्फ प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना ही होता है. देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ लो. सर एक बार एक्सप्लेन कर दोगे बिफोर आयनाइजेशन वाले बात से? पहले से स्ट्रॉन्ग एसिड ने कुछ दे रखा है H प्लस, है ना, दैट आई एम टेकिंग एज C, है ना? यस सर. वाटर ने भी कुछ H प्लस क्रिएट किया होगा, बट वाटर ने जितना H प्लस क्रिएट किया होगा उतना ही OH माइनस, तो OH माइनस अगर X है तो वाटर का H प्लस जो होगा वो भी X होगा, तो अब OH माइनस तो X ही रह गया, बट H प्लस फ्रॉम H प्लस टोटल जो हो गया दैट हैज बिकम C प्लस X, है ना? H2O से आने वाला X और स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला C, so total H plus has become C plus X. Is it okay? Yes sir. Okay. Now we can write H plus into OH minus equals KW, that we can always write in any aqueous solution, है ना? And then we have got a quadratic equation which we are solving and we are getting the H plus total. और जैसे H plus total आ गया, अब यहाँ से pH निकाल देंगे. We'll write pH is equal to minus log of H plus total, which was C plus X. We can write minus log of this whole number, C plus root under C square plus 4kW upon 2. Is it okay? Yes sir. Okay. So I'm summarizing this whole thing. जो भी मैंने बताया ना, रिवीजन में सिर्फ इतना लिख के रखोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ. So these are the true situations in which we can get the pH कितना निकालेगा, कौन से केस में क्या लेने का है. एक स्पेशल केस बता रहा हूं मैं, which is rare, कभी दिख जाए तो ठीक है. मान लो कभी कभी
एक special case I am writing. If H plus from strong acid is even more than 1, अच्छा ये SA जब भी मैं लिखूं that is strong acid, WA का मतलब anyone? WA लिख दिया तो this will be short form. SA is a strong acid, WA will be weak acid. Weak. SB will be strong base, WB will be weak base. Is it okay? तो कभी कंफ्यूजन में मत पड़ना. If I'm writing SA here, it is strong acid. उसी में कभी SB लिख दूंगा, that will be strong base. So I'm writing if H plus from strong acid, which is C, becomes greater than equal to 1. In that case, we are saying that activity is not exactly same as molarity. In this case, we say that A of H plus जो होता है ना, that is not necessarily same as molarity of H plus. In that case, if nothing is given, we take A of H plus directly equal to 1. So if, in this case, if activity of H plus is not given, we take activity of H plus equal to 1, and that's why pH in that case will become 0. But if they have not given you anything, otherwise whatever they are giving you the number, that comes from the experimental determination. तो अगर उन्होंने दे रखा है तो फिर we'll take that value, otherwise you can directly write, मान लो बोल दिया 2m HCl solution, so we'll say pH equals 0. 3m HCl solution, pH equals 0. Directly we can say, if they have not given you the activity of H plus, because that is not directly same as the molarity. In fact, in number तो molarity तो deviate करने लगता है 0.1 से ऊपर ही. Activity and molarity become slightly different, but up to 1 we take that as कि ठीक है molarity जितना उसी को activity ले लो. But 1 के ऊपर तो not acceptable. That's a special case. Normally दिया नहीं जाता है, but अगर कहीं दिख जाए तो we'll be talking about this. Otherwise बाकी cases के लिए जो ऊपर मैंने दो cases लिखे हैं, case within the case जो बना के दिया है, these are sufficient enough. और इसकी बेसिस पर अब देखो, जैसे एक आईआईटी ने क्वेश्चन बहुत पहले पूछ दिया था, 10⁻⁷ m HCl सॉल्यूशन का पीएच बताओ. Now 10⁻⁷ जैसे मैंने बोल दिया, that comes in this second case है ना, where C is less than 10⁻�6. Now we have to solve this quadratic equation. ये बहुत पुरानी कहानी में बता रहा हूँ. उसके बाद ये इतना कॉमन हो गया ना, ये लोगों ने रटना स्टार्ट कर दिया. इनफैक्ट वो नीट में आने लगा, where you are supposed to solve the problem within 45 seconds. ओके, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आने लगे. तो फिर कुछ टिपिकल वैल्यू जो है ना, दैट आई गिव यू, उसमें हमेशा याद रखना. तो आई गिव यू अ टेबल, उस टेबल से तुम्हारा काम हो जाएगा. तो मान लो इफ आई गिव यू H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, आई गिव यू अ टेबल जस्ट. नॉट हियर, चलो मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ. So if I give you a table, H plus from strong acid C है, H plus टोटल कितना होगा, देन pH क्या होगा. Like if the C is greater than equal to 1, तो फिर डायरेक्टली यहां से हम लोग pH 0 रिपोर्ट करते हैं. दैट्स वन केस. चेंज द कलर. Okay, so if I take first case where C is even greater than equal to 1, so directly we will say कि pH will be almost 0 to almost tending to 0. If it is C जो है ना वो 1 से कम हो जाए but 10⁻⁶ से ज्यादा है, then we are taking H plus total will also be equal to C, and that's why because we are neglecting water का H plus in comparison to that, so this will become simply log minus log C. Okay, if it is coming C is coming less than में रखो, equality पे तो नहीं रखो, less than पे रखो, less than 10⁻⁶ हो गया,
then we are saying h plus total will become c plus root under c square plus 4kw upon 2, and इसके हिसाब से pH can be calculated minus log of h plus total. यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि फ्यूचर में तुमको रेफरेंस की तरह रहेगा. इफ आई गिव यू 10⁻⁻⁷, तो फिर यहाँ देखोगे ये जो pH आता है ना, डायरेक्टली pH का वैल्यू दे रहा हूँ मैं, दैट विल बी कमिंग इन द रेंज ऑफ, देखो ये 7 नहीं आएगा pH, बिकॉज एसिडिक सॉल्यूशन कैन नेवर बी न्यूट्रल है ना. pH 7 लिख दिया 25 पे तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा. तो यहाँ पर इट विल बी कमिंग इन द रेंज ऑफ 6.8. अगर मैंने 10⁻⁸ लिखा ना, तो इट विल बी कमिंग इन द रेंज ऑफ 6.98 जैसा. इफ आई राइट, एक और बढ़ा देता हूँ, जस्ट गिव यू वन मोर डेटा. इफ आई गिव यू 10⁻⁸ से भी कम हो गया, मान लो less than 10⁻⁸, then it will become very close to 7, but still just below 7. Okay, these numbers are going to help you. मान लो अगर उन्होंने दे दिया 5 into 10⁻⁷, तो now या 5 into 10⁻⁸ दे दिया, तो now we are knowing 6.8 and 6.98 के बीच में कुछ नंबर आना चाहिए ना. So in that way you can handle these numbers. अभी तो इतना कॉमन हो गया कि जेई तो जनरली नहीं पूछ रहा है ये सब, अभी नीट में ये सब आने लग गया, इतना कॉमन हो चुका है ये. ठीक है, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, जस्ट ट्राई दोस क्वेश्चंस एंड यू विल गेट टू नो कि मैं ऐसे क्वेश्चन जब बोलूंगा तो हाउ टू आंसर देम. बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, सिमिलर केस विल बी केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और बेसिस. इन दैट केस इफ आई एम गेटिंग, अगेन यही जो दो केस मैंने यहाँ पर बताया ना कि H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड अगर C है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के ये सारे केसेस हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो केस आएगा ना, जो यहाँ H प्लस है वही वहाँ OH माइनस बन के आएगा, एंड अल्टीमेटली POH निकालने के बाद 14 माइनस POH विल गिव यू द pH, है ना. तो स्ट्रॉन्ग बेस का डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि दीज आर पेयर ऑफ केसेस. तो यहाँ भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस का अगर OH माइनस इज C, अगेन वी विल कंपेयर इट विद 10⁻⁻⁶. If it is coming greater than that, we can directly write POH will become minus log of C, and pH will be pKw minus POH, which is I'll remove this from here. यहाँ की जगह मैं I'll write it there only. So if it is talking about 25 degrees C, so we can directly write it will be 14 minus POH at 25 degrees C. This will be the number. Okay, this is a one part. Similarly, if it is coming less than 10⁻⁶, then we need to solve the quadratic. Last time, like I told you, just replace H plus by OH minus and OH minus by H plus. We'll be getting all the numbers same. बाकी सब same रह जाएगा, and this is the formula. So again, a similar type of table if I want to copy na. If I just try to edit it, तो this time POH के लिए ये सारी चीजें आ जाएंगी ना. तो OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस अगर C आ गया, तो OH माइनस टोटल कितना आएगा, दिस इज फॉर POH, एंड देन आई मेक वन मोर कॉलम एंड दैट विल गिव यू pH, है ना. यहाँ पे भी इट विल बी OH माइनस टोटल. Now in these cases if I have to write POH ना, pH कितना हो जाएगा, तो विल राइट इन फर्स्ट केस इट विल बिकम 14 जैसा हो जाएगा. दूसरे वाले में 14 माइनस लॉग C करेंगे, विल बी गेटिंग, यहाँ पे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 माइनस लॉग C करेंगे, तो वी कैन डायरेक्टली राइट 14 प्लस लॉग C. यहाँ पे अगेन 14 माइनस POH लिख देता हूँ मैं इन जनरल, लाइक यहाँ पे इट विल बिकम 7.2, यहाँ पे इट विल बिकम 7.02, यहाँ पे इट विल बिकम वेरी क्लोज टू 7, बट स्टिल जस्ट अबव 7, है ना. इट कैन नेवर बी लेस देन 7, है ना. तो दीज आर द टू केसेस जिसकी बात मैंने की थी. थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस.
तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं एंड देन if you have any doubt just ask me. Like I'll give you first एक क्वेश्चन डायरेक्ट देता हूं मैं. It is single alone question, then I'll give you set of questions. Try this one. Atomic masses I'll write here. H is 1, S is 32, O is 16. Yeah. Solve this one and tell me the answer. Any answer? Okay, Mark has got an answer. Sharang, any answer? Vivan? Sharang, log 2 is 0.3. Okay, sir. So I'll write some logs. वैसे तो मैंने बोला था 0.301 and again especially in JEE mains, very careful, be very careful. If they have not given you anything, take this one. If they have given you this value, take this one. Otherwise 0.3 से फर्क ना पड़ जाए इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में, we need to be careful about that. Log 3 वैसे तो 0.477 होता है. We can take that for in my class you can take 4.48 जैसा चलता है. Log 7 is 0.84 समथिंग होता है, तो 85 ले सकते हो. Log 11 के लिए you can take 1.04 this. So whenever you will require this. बाकी we can manage. Log 10 is 1, log 5 will be 1 minus log 2 है ना. Log 1 is 0. Okay, Rehan has given me the answer. Anyone else? See, सबसे पहला तो क्वेश्चन आ गया कि I have given you कि मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन कि what is the concentration of H2SO4 itself है ना. If I have to calculate H2SO4 का concentration, I have got its mass, but that is in milligram. We need to be careful about that. If I have to calculate H2SO4 की molarity कितनी है, I'm taking its mass, तो पहले तो इसको ग्राम में convert करो, तो that will be 0.49 divided by its molar mass in gram, that is 98 gram होता है ना. That is moles of H2SO4 whole divided by, if I'm taking this one in liter, so this will become 0.1 है ना. Okay, so almost all of you have got the right answer except एक आंसर अभी तक wrong दिखा है मेरे को. So this one, if you calculate this one ना, तो ऊपर वाला देखो 2 times and then 0.01, तो 0.1 by 2. This is coming 0.1 by 2, or we can write 0.05, whatever you want to write. Now H2SO4, like I told you, जब तक मैंने कुछ equilibrium constant वगैरह नहीं दी रखा है, तो we'll be talking about this type of ionization for H2SO4. And that's why we can say that जितना H2SO4 उसका double H plus मिलने वाला है.
So that's why we'll say H plus from H2SO4 from H2SO4 is going to be equal to double of whatever was the concentration of H2SO4 itself. So it will become 0.1, which is 10 raised to minus 1, जिसको मैंने C बोला हुआ था, and that is greater than definitely 10 raised to minus 6 है ना. अगर ऐसा आता है तो pH डायरेक्टली इसी से निकाल देते हैं, तो pH will be minus log of 10 raised to minus 1 directly, which is equal to 1. आदित्य क्या इशू हो रहा है? Again Neil. आदित्य you there? अरे यार इसका केस ही अलग है. तो whatever mistakes you all are doing ना, उसको highlight करते रहोगे so that you get the right answer. Okay. चलो, now I'll give you a set of questions. So set of questions को मैं homework में दे दूंगा. I'll ask you some other. At the end, I'll give you those set of questions. Solve this one. You can have one or more than one correct. Okay. Quiz ma'am, ठीक है. Sarang, you are giving just one answer. Okay. No, so I'm solving the others. I've got like one. I'm solving the Okay. other. ठीक है. One or more than one may you can have a possibility that you can get only one answer right. है ना? That is also a possibility. Okay, everyone has given me the answer. Sharang has given me the answer. Okay.
Okay, tell me which options should be directly rejected, that we should not even check. Which options can be directly rejected? Okay, Vivan, C and D. Why C and D? These are strong bases, है ना? This is strong base. This is strong base. Strong base के solution का pH तो 7 से नीचे तो आ ही नहीं सकता as 25 degree से, है ना? And that's why definitely these cannot have pH equals 3 because इसके लिए pH definitely greater than 7 ही आएगा. pH greater than 7 ही आएगा तो 3 तो आ ही नहीं सकता. Now let's talk about the B option, है ना? B option में if I'm talking about this, तो then H plus from strong acid will be double of it, है ना? So 2 into 5 into 10 raised to minus 2 is not 10 raised to minus 3. See, I know your psychology कि तुम इसको 10 raised to minus 3 लिख दोगे. लिखा है काफी लोगों ने, है ना? काफी लोगों ने लिखा है. बी ऑप्शन जिन लोगों ने भी दिए हैं, नील ने दिया है, महक ने दिया है. तो whoever is writing B, I was knowing that कि तुम इसको ऐसा लिख दोगे and definitely क्योंकि एक आ जाता है कि हाँ ठीक है 10 टाइम्स हो रहा है 10 raised to minus 2 है और आंसर में 3 जैसा कुछ आना चाहिए बट इट इज 10 raised to minus 1 एक्चुअली. ये पिछला वाले क्वेश्चन का ही रीफ्रेमिंग था, है ना? So that's why इसका अगर pH कोई पूछे तो विल से इसका pH will be 1. This number is 10 raised to minus 6 से ज्यादा है तो डायरेक्टली यहाँ से pH equals 1 आएगा. It is not 3. This is strong acid. This is strong acid. So that's why we are taking H plus from strong acid in A case will be 1 times क्योंकि HCl है तो it will give you 1 times 10 raised to minus 3. That is more than 10 raised to minus 6. So that's why pH can directly be calculated from here and that will be 3. And that's why the only option right is A, not even B. So even if they are writing one or more than one, it is only A which is the right answer. Is it okay? अच्छा, if I ask you C and D का कितना आता pH? ए के लिए तो हम लोगों ने बोल दिया, ए के लिए pH is 3. बी के लिए बोल दिया pH is 1. If I ask you C के लिए pH कितना होगा? How much? C के लिए देखो ना, OH minus from strong base कितना आ रहा है? It is 10 raised to minus 11, which is 10 raised to minus 6 से तो कम ही है, बट ये बहुत छोटा हो गया. याद करो मैंने 10 raised to minus 8 के नीचे ही बोलना शुरू कर दिया था कि very close to 7 आने लगेगा, है ना? And that's why we are saying कि C option या D option के आंसर जो होंगे ना exactly equal नहीं होंगे but they will be very close to. This is less than even 10 raised to minus 8 आ रहा है. So that's why we'll say कि यहाँ पर pH will be very close to 7 itself, 7.00 something ऐसा कुछ आएगा, just above 7 ऐसे. और D में भी same. D में भी we are writing OH minus, देखो वही आ रहा है. अच्छा, इसमें दोनों में सेम ही आएगा आंसर बिकॉज यहाँ पर that will be 2 into 5 into 10 raised to minus 12 and that is coming again 10 raised to minus 11 which is less than 10 raised to minus 6. तो है, ये तो क्वाड्रेटिक में जाता बट I told you कि 10 raised to minus 8 से कम हो जाए we can write pH will be very close to 7 हो जाएगा, just above 7, 7.00 something. Okay, so nearest integer will be 7 only. Any doubt in this part? So let's go to next question. This one, solve this one. And if you have any doubt in the previous one, just ask me.
Okay, Vivan, you have given me some answer. I don't think it is the right answer. Pratyush has got the right answer, I think. Anyone else having any answer? यहाँ पे जस्ट इसको मैं टेक्निकली करेक्ट कर देता हूँ. ऑफ एन aqueous solution having strong acid with pH equals 2.3, so that its pH becomes 4 at 25 degrees C. Okay, let's see. काफी टाइम दे दिया. Before dilution, volume was 1 liter and जो H plus total आ रहा है ना, pH is given as 2.3, pH is 2.3, that means H plus total will be 10 raised to minus 2.3 है ना, because minus log of H plus is 2.3, so H plus total will be this much. Now I am writing this is nothing but H plus from a strong acid itself, because ये नंबर जो 10 raised to minus 6 से तो ज्यादा ही दिख रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने वाटर को इग्नोर किया होगा. So we are writing this is this much. अब ये तो वॉल्यूम, ये तो कंसंट्रेशन हो गया, दैट मींस मोलरिटी हो गई. तो मोल्स ऑफ H plus from strong acid is nothing but molarity into volume है ना. डाइल्यूशन से मोल्स तो चेंज नहीं होंगे ना H plus from strong acid के. तो आफ्टर डाइल्यूशन, if I assume that volume was x liter, pH given is still more than 6 है ना, तो अभी भी हम लोग वाटर का H plus तो इसमें नहीं रहा होगा, डेफिनेटली वी कैन से. So we are writing H plus total जो 10 raised to minus 4 है, that is nothing but H plus from strong acid, because it is still 10 raised to minus 6 से तो ज्यादा. ये तो वाटर का तो अभी भी कोई रोल उसमें pH वाले में नहीं है, वॉल्यूम में है बट H plus वाले में नहीं है, H plus के मोल्स या मोलरिटी में नहीं ले रहा है. So we are saying that this is nothing but H plus from strong acid itself, which is 10 raised to minus 4, and that's why we are writing moles of H plus from strong acid is nothing but 10 raised to minus 4 into x है ना, और ये दोनों चीजें बराबर होंगी. These two things are going to be equal है ना. So that's why we are writing that 10 raised to minus 4 into x will be equal to 10 raised to minus 2.3 into 1. Dilution से moles of solute तो change नहीं हो रहा है, and that's why we are writing x will be nothing but 10 raised to minus 2.3 upon 10 raised to minus 4, which can be written as 10 raised to 1.7. Now how to handle that? प्रत्युष कैसे हैंडल करें इसको बताओ. प्रत्युष, you there? You have solved it, huh? Yeah, tell me. Anyone else? कोई भी कर सकता है क्या इसको सॉल्व? Sir, we know that it lies between 10 and 100, तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या? आई एम आस्किंग यू द नंबर अगेन है ना, बिकॉज इट इज आस्किंग कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड यू विल बी गेटिंग ऑप्शंस में नंबर्स मिलेंगे इफ इट इज सेट लाइक दिस व्हिच आई हैव गिवन यू. मैंने सेट करके दिया है इसको नंबर. कैन आई राइट दिस वन एज this into 10 raised to 1?
Now understand that log 5 is 0.7 है ना, which means it is nothing but 10 raised to 0.7 is 5 है ना, we can write that है ना. तो ऐसे नंबर जब भी है ना, तो you can deal it in this term, or otherwise you can take x is this much, so log x will be how much. If you get that, and you can simplify that again, so we can write this is nothing but 5 into 10, which is 50. Will this be the answer? Will 50 be the answer? Okay, why 49? Because it is asking you volume of water required to be added, और 1 liter तो पहले से था, टोटल बाद का 50 हुआ है, तो that means we have added 49 liters है ना. So volume of water added will be final volume minus initial volume, and that is 49 liter. That is going to be the answer. Is it okay? Any doubt? Solve this one. नील देखो ना, अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया था ना, इफ 10 रेज टू -6 से ऊपर H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वी कैन डायरेक्टली इग्नोर. अच्छा, ये वाला पार्ट यू आर सेइंग यहां से यहां पूछ रहे हो क्या नील? आर यू आस्किंग दिस पार्ट? Yes, sir. Okay, what I am saying, if pH is, I'll change the color. pH is given as 2.3. pH is nothing but minus log of H plus total है ना, is 2.3. What does it mean? Log of H plus total is minus 2.3. So we can write ना, तो कभी भी तुमको दे देना log x is y, so we can say 10 raised to y is sir, x. I got it. तो वैसा ही we can write H plus total is nothing but 10 raised to minus 2.3 है ना. Okay. Yeah. So next question you try, you all try, and just see that I've given you the log के values, तो exactly उतना ही लेना पड़ेगा. You can't change the values. Now check your solution again. It doesn't seem possible that you'll be getting any answer less than 2 or more than 4. रेहान, इतना कॉम्प्लिकेटेड, सब लॉग के वैल्यू दे रखे हैं मैंने. Sir, but वो उसका वैल्यू कैसे ढूंढना है?
नहीं, तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। अच्छा 1.01 दिया हुआ है ना, जस्ट चेक कर लो, यू कैन मैनेज दैट ना। log 1.01 का वैल्यू दिया है मैंने, हाँ यस सर। है ना। Okay, I think Mark, you have got the right answer. Sarang, your answer is not right again. You are going less than 2. Pratyush has got the right answer. Pratyush. Rehan, your answer is not right. Okay, chalo, काफी time दे दिया. Let's see the solution. Now, basically, I'm talking about two solutions which are being mixed. We have got first solution and we have got second solution. First solution is having volume, equal volume बोला है तो दोनों को V लीटर assume कर लेते हैं. चलो x लिख देता हूँ confusion avoid करने के लिए. This is x liter, so this is also x liter, है ना. Now for this pH is 2. Again, similarly we can write H plus total is 10 raised to minus 2, because again it is coming 10 raised to minus 6 से ज्यादा है तो definitely water नहीं लिया होगा इसमें, water से H plus नहीं लिया होगा तो what H plus from strong acid है तो यही रहा होगा, है ना. That's one part. यहाँ पे pH is equal to 4, so we must be having H plus total is equal to 10 raised to minus 4. Again this is 10 raised to minus 6 से ज्यादा ही है तो अभी भी water का contribution नहीं आया है, so this is also H plus from strong acid only, that is 10 raised to minus 4. Now after that we know that कि जब भी हम लोग दोनों को mix करेंगे तो moles of H plus will get added, volume will get added, है ना. mixing of two solution में यही सीखा होगा mole के टाइप पे. So now moles of H plus from strong acid here is 10 raised to minus 2 into x, and यहाँ पे moles of H plus from strong acid. Right now I'm doing it step wise. एग्जाम में इतना नहीं करोगे ये सब, अभी माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए. इन वन स्टेप यू कैन डू दैट थिंग. तो 10 raised to minus 4 into x, बट जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है you can write all the steps. And then in mixture what I'll write, moles of H plus total जो आएगा that will become 10 raised to minus 2 into x plus 10 raised to minus 4 into x, and volume जो आएगा that will become x plus x, that is 2x. 2x liter हो जाएगा ना. And then we can write H mixture का H plus कितना है, so H plus की molarity जो आएगी that will be 10 raised to minus 2x plus, अभी मैं फ्यूचर में ये बता रहा हूँ ये जो मैं फाइनल अभी लिख रहा हूँ ना that you have to write during the exam. अभी इतना टाइम नहीं होता कि you are writing these many steps. हाँ बोर्ड में you have to write everything, but एग्जाम में जो JEE में है that you don't have that much time. तो x देखो कैंसिल आउट हो जाएगा तो we are getting 10 raised to minus 2. अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पर 10 raised to minus 2 कॉमन ले लेता हूँ तो आई एम गेटिंग 1 plus 10 raised to minus 2 है ना अपॉन 2. so we are taking 10 raised to minus 2 into ये देखो 1.01 हो गया इसलिए मैंने वो लॉग का वैल्यू दे रखा था this much, and that number is again greater than 10 raised to minus 6, तो यहीं से डायरेक्टली pH निकाल सकते हैं ना. तो pH will be, और मैंने याद करो बताया था अगर H plus जो आता है ना if that is x a into 10 raised to minus b जैसा कुछ आ जाए ना तो pH जो होगा that will become b minus log a जैसा, है ना. ये सीखा था. तो pH अभी डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं. इसको देखो ना 1.01 by 2 into 10 raised to minus 2 लिखा है तो we can write it will become 2 minus log
1.01 by 2, and that is 2 minus log 1.01. अभी देखो प्लस log 2 हो जाएगा और दोनों के वैल्यूज दे रखे थे, तो 2 माइनस log 1.01 का वैल्यू मैंने दे रखा है 0.004 एंड log 2 का वैल्यू दे रखा है 0.301. So that becomes 2.297. That will be the answer. Is it okay? Any doubt? Sir, हाँ जी. in that step, suppose we did not take it common, तो फिर we'll get minus log of 0.505 जो मैंने आपको भेजा था ना. Okay, so let's handle that also. Log 0. How much? 505. 0505 or 505? 0.505. 0.505. Okay, let's handle that also. How to handle this? I can see that now this is nothing but 5 into 1.01 by 10 तो लिख ही सकते हैं इसको. Yes, sir. बस हो गया. That is log 1.01 minus log, ये देखो 2 times हो जाएगा ना. Okay, Yes, sir. बस हो गया हैंडल. चलो, तो this much was strong acid का. कुछ I'll give you homework so that you can have practice over those questions. Let's go to the next case, which is case number 3, where we have got weak monoprotic acids. I'm not talking about weak polyprotic right now. I'm talking about only weak monoprotic. अब इसमें देखो दो चीजों को मैंने बोल्ड करके रखा है. एक है S3PO2 which is having 3 hydrogen but all of them are not acidic because of its structure. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो phosphorus is with one double bond. There is just one OH and बाकी जो H है ना, they are directly bonded with this one. So we are saying this is only the acidic hydrogen, and that's why we are saying it is a monoprotic acid. H3BO3 का नेचर मैंने बताया होगा तुमको पहले भी. वैसे भी जैसे मैंने बोला कि we are going to have a theoretical discussion over the different kind of acids base and the theories related to that. तो H3BO3 में क्या होता है ना, the structure is B पे we have got OH, we have got OH and we have got OH. तो ऐसा लगता है कि with this structure ना it should be a triprotic acid है ना. But what is happening, it is not acting with these hydrogen atoms. It is having a vacant orbital over boron. This is a vacant orbital and it is going to accept that OH minus in this vacant orbital or the electron pair in this vacant orbital, and that's why it is behaving as a Lewis acid. So we are calling it a weak monobasic Lewis acid. It is not a protic acid. It is a Lewis acid. जो लास्ट वाला डेफिनेशन लास्ट क्लास में मैंने बताया था वैसा है. तो बिहेवियर कैसा होता है, जैसे अगर मुझे CH3COH का दिखाना है ना, मान लो CH3COH का दिखाना है, तो आई विल राइट जो मैंने पहले भी लिखा था. आई कैन डायरेक्टली राइट दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3CO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. बट if I am having H3BO3 तो इसको डायरेक्ट ऐसा आयनाइज होता हुआ नहीं दिखाते. What we write one H2O on this side and then we show it like it will be capturing OH minus from water and that's how it will be forming this thing. ऐसा कुछ बना लेगा aqueous and then it will release H plus. Okay, so actually it is capturing OH minus. As a result one H plus is being released and that's why it is a weak monobasic acid है ना. So that is another part like I told you. But in both the cases the weak acid is creating anion and H plus. This is weak acid which is generating anion and H plus है ना. In that way both of them are in the same direction है ना. Both of them are giving you similar reactions. But like I told you H3BO3 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो ट्राइप्रोटिक एसिड है. इट इज स्टिल वीक मोनोप्रोटिक एसिड ओनली. इनफैक्ट इसको वीक मोनोबेसिक एसिड बोलने लगते हैं. प्रोटिक का मतलब H प्लस देने वाला होता है. तो इसको हम लोग वीक, यहाँ जैसा मैंने लिखा है वी कॉल इट वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड. आई विल मेंशन दैट आल्सो. दिस इज लुईस एसिड, नॉट
ब्रोंस्टेड लॉन्ग एसिड, ठीक है, दैट्स अनदर पार्ट। बाकी सब जितने हैं सब के सब मोनोप्रोटिक है। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। आई हैव जस्ट इंडिकेटेड द एसिडिक हाइड्रोजन। एनी डाउट इन दैट? बिकॉज इसके आगे कैलकुलेशन है। एनी डाउट? देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, मैं बाद में एक टेबल में शॉर्ट में लिख भी दूंगा। तो इफ आई एम हैविंग, मान लो वीक एसिड को मैं इन जनरल इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग इट लाइक HA, अगेन इफ इट इज H3BO3 तो लेफ्ट साइड में वाटर भी लिखेंगे जिसका कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट वी कैन राइट इट इज गिविंग यू H प्लस एंड द अनायन है ना, तो राइट नाउ आई एम राइटिंग HA माइनस ये, और मान लो ये कुछ K का वैल्यू दिया हुआ है इसका एसिड का। Okay, so now if I have to write before before ionization or initial, if I write, if its concentration is C, this was not there, this was not there, at equilibrium after ionization, I can write this will become C into 1 minus alpha, this will become C alpha, this will become C alpha, है ना? ये सब किया है हम लोगों ने कई बार, स्टार्ट में लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था। The consumption of it will be C alpha, so it will be produced C alpha, and this will also be produced C alpha. That's why at equilibrium, what we are writing, H plus raised to 1, A minus raised to 1, these are the coefficients which I'm writing as a power, raised to 1, that will be equal to K of the acid. So we can write C alpha into C alpha upon C into, वो मैंने पहले भी लिखा था तुमको, that is equal to K. So ultimately we are getting alpha squared by 1 minus, अभी के लिए मैं इधर ही लिखता हूँ इसको, C alpha squared by 1 minus alpha equals K. That's equation number 1 I am calling it. Okay. Now what is happening here? दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज ये है कि अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है कि नहीं करना है, तो उसमें जाएंगे, बट उसके पहले इसका एक स्पेशल फॉर्म है। अभी मैंने लिखा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू K। ध्यान से देखो C अल्फा इज नथिंग बट H प्लस के बराबर है ना, तो वी कैन राइट C अल्फा की जगह H प्लस इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू K, है ना। So we can also write alpha upon 1 minus alpha is Ka upon H plus. This is the equation you will be using if you have been given the pH directly, है ना। pH निकालना है तो क्या करेंगे वो तो बाद में है, but if pH and K is given then we will be using this one. Use if pH is given, क्योंकि H plus pH दिया हुआ है तो H plus पता है, तो ये एक स्पेशल फॉर्म हो गया थोड़ा सा। बट अदरवाइज अब हम लोग इक्वेशन 1 पे जाते हैं। इक्वेशन 1 में जो क्वाड्रेटिक आया है, वेदर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक और वेदर टू डू द नेग्लेक्शन वाला, मान लो अल्फा 1 के सामने नेग्लेक्ट हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? अल्फा कितना आएगा? आई एम कमिंग बैक टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1, I'll say if alpha is much less than 1, ये कब लेते हैं? जब अल्फा 0.1 से कम हो जाए। अल्फा अगर 0.1 से कम हो जाए तो देन वी कैन से अल्फा इज मच लेस देन 1, एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट 1 माइनस अल्फा की जगह वी कैन राइट 1। ऐसा लिखते ही बताओ जरा अल्फा कितना आता है? हाउ मच विल बी द अल्फा? अंडर रूट almost zero. K अपॉन C। Oh, अच्छा वैसे sir. तो अभी मैंने क्या किया, C अल्फा स्क्वायर इक्वल्स K लिख दिया ना, which means अल्फा इज कमिंग अंडर रूट K अपॉन C। ओके, ऐसा आता है। बट अब क्या मुझे ये सपना आएगा कि अल्फा 0.1 से? अभी तो सॉल्व करना है मेरे को, फिर अल्फा कुछ आएगा। बिना सॉल्व किए हुए हाउ टू टेक द डिसीजन, तो ऑलरेडी ये डिसाइड किया एंड इट इज अ लॉजिकल पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट सो मच। व्हाई वी आर टेकिंग दिस कंडीशन? तो व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर कि
अल्फा अगर 0.1 से कम होने वाला रहेगा तो अल्फा का वैल्यू रूट अंडर के बाय सी आने वाला था. And if you have been given k and c, तो what we'll do now, we'll check the under root k by c का value. ठीक है? So what we are going to do, we'll create two cases. Case one is, we'll create two cases. This is again case within the case. Case one is if under root k upon c is coming less than equal to 0.1. ठीक है? Then we can say alpha is much less than 1, and that's why alpha itself is under root k by c. इतना ले लेते हैं और फिर इतना आते ही we check that H plus from acid, अभी ये weak acid है, that is C alpha था, तो that will become under root k into C. एक बार को इसको चेक कर लेना है if it is greater than 10 raised to minus 6 or not. नहीं रहेगा तो फिर ये उधर जाएगा जैसे वाटर का कंट्रीब्यूशन के साथ लेते तो that we need to consider. Otherwise we can directly take, normally इसमें आ जाता है, अगर नहीं आएगा तो 10 raised to minus 7 आएगा तो we know that कि 6.8 रिपोर्ट करना है, 10 raised to minus 8 आएगा तो we know that 6.98 रिपोर्ट करना है. But in general we have to go back to the quadratic equation जो water वाले केस में दिया था. Otherwise अगर ऐसा है तो we can directly calculate pH, है ना? तो pH is minus log of under root k into c, and that will give you, देखो जरा इसको हाफ अगर मैं बाहर ले लूँ ना तो what we are getting half into minus log of k and then minus log of c. अभी minus log of k को what we can see, we can write pk है ना, minus log of k को we can write half pk, मैं फिर इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, pk minus log c into half, that will become the formula. अच्छा ये हाँ ब्रैकेट में लिया, yes. So this will become the formula, but always check that कि 10 raised to minus 6 से ज्यादा है कि नहीं. Now अगर ये नहीं है तो फिर you have to solve the quadratic. Case 2, if under root k by c is greater than 0.1 आ जाए, then we will say alpha cannot be neglected in comparison to 1. And that's why hence you have to solve the quadratic. Solve c alpha square by 1 minus alpha equals ka to get alpha, and then we have got c alpha ka value will be equal to k h plus, and then we'll get h plus from weak acid will be c alpha, and if that is greater than equal to 10 raised to minus 6, then we can write pH equals minus log of c alpha, है ना? बस यही कहानी है. Any doubt then ask me. Just for your help, I have prepared the summary table of it. और revision में इतना already मतलब just you have to understand all these steps, and then I have written it in short. पूरा एक टेबल बना के रख दिया तुम्हारे लिए कि कब क्या करने का है. If you have any doubt, whatever I have told you now, everything is written on the screen. मतलब it is there. And जैसा मैंने बताया था हमेशा इसको चेक कर लेने का है, जो मैंने बोला था यहाँ पर इसको चेक कर लेने का है. This should be greater than 10 raised to minus 6 तो डायरेक्टली लिख देंगे. यहाँ से भी whatever we are coming, it should be greater than equal to 10 raised to minus 6 तो डायरेक्टली यहाँ से h plus निकाल देंगे. Otherwise अगर वो लेस आ गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, ये क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन में चला जाएगा ना, and then you have to report. Like I told you, H plus from weak acid को हमेशा यहाँ पर मैंने X रख दिया है, and you have to check that कि whether it is greater than 10 raised to minus 6 or not. If it is there, तो minus log of X will give you, minus log of X plus from weak acid will give you pH. Otherwise, you have one more step that water का H plus include करके जो आता था ना, that was this much है ना, वहाँ C लिखा था, यहाँ X है, X is minus log X plus from weak acid है ना, so that much you have to write. Any doubt?
अब इसी का एक सिमिलर केस चला जाएगा इफ आई एम हैविंग बेस वाला, तो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो इसी का देखो, एक जहां H प्लस है वहां OH माइनस हो जाएगा, जहां PH वहां POH आ जाएगा, एंड फाइनली वी हैव टू राइट 14 माइनस POH इक्वल्स PH। केस 4 यही है। देख लो, एक बार डाउट है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। एनी डाउट? चलो, आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम strong acid strong base wala, and then I'll give you some homework question based on this part, है ना? तो I'll just give you, okay, so now first I'll give you some homework question from there. इसको ट्राई करके रखोगे, then only you'll be getting confidence कि नहीं मेरे को आ रहा है, या फिर डाउट्स आएगा, then doubts we'll be discussing in the next lecture if you have any doubt. So write homework. Case 1 and 2 वाले already I am giving you a hint कि case 1 2 वाले कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, like if I give you this whole thing, I'm giving you 10 questions for direct calculation of pH in this case. Then mixture of acids may be same. I can have this one. Okay. You try these questions and then case number 3 and 4 के लिए या एक नोट जस्ट मैं दे देता हूं ताकि it will help you. Sometimes they'll be asking you relative strength of acids. Weak acids के लिए if they are asking you relative strength, ना, it is the ratio of their H plus coming with at a given concentration. And अभी just हम लोगों ने बोला था H plus was under root K into Cr था. So it is square root ratio of square root of their K values. Okay, तो whenever they are asking you ना, एक क्वेश्चन में पूछा होगा मैंने relative strength बताओ, या I think this one, not हाँ this one. See, यहाँ पर आई एम आस्किंग यू रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो इट इज आइदर H प्लस का रेशियो और अंडर रूट ए का रेशियो ऑफ द टू एसिड्स। ठीक है, तो दीज आर 7 क्वेश्चंस, एंड उसके पहले ये जो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के दिए हैं 10 प्लस 3 13, तो 20 क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे पास। सफिशिएंट क्वेश्चंस आर देयर, जस्ट गो थ्रू द नोट्स अगेन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम देयर हाईलाइट करके रखोगे, एंड देन उसके बाद ये 20 क्वेश्चंस ट्राई करके रखोगे, सो दैट व्हेनेवर वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीक ना, अभी तो मंडे को सीधा हम लोग आयनिक पे जाएंगे, बाकी 2 लेक्चर्स में जीओसी खत्म करके आइसोमेरिज विल स्टार्ट, है ना, तो वहां पर जाके विल बी टॉकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है, पेस वाले जो होंगे पेस के मॉड्यूल में दिखेगा ये क्वेश्चन, बट इंटरेस्टिंग है, दिस इज गुड गुड क्वेश्चन। ओके, चलो फिर क्लोज करते हैं आज का लेक्चर, है ना, चलो जी, बाय एवरीवन। I just had 2 doubts. Like after the lecture, can I just